Namaskar everyone, welcome to Headlines of the Day. In this video we will discuss major headlines of the Hindu. और आज की शुरुआत करने से पहले यही कहेंगे दोस्तों कि थोड़ा सब्र रखो, अभी इम्तिहान जारी है, वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इंपॉर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं। आज की हमारी पहली हेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट जज recuses herself from hearing Bilkis Banu's petition. It is available on page number 1. और ये रिलेटेड पेपर टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट रिक्यूजल ऑफ जजेस एंड व्हाट इज द प्रोसेस फॉर रिक्यूजल। तो दोस्तों, when there is a conflict of interest, a judge can withdraw from hearing a case to prevent creating a perception that judge carried a bias while deciding the case, right? Our next important headline is Chinese try to change LAC status quo, Rajnath. It is available on page number 1 और ये related paper to international relations से। In this article we have to know about India-China relations, बॉर्डर इश्यूज एंड सजेशंस टू हैंडल देम। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड कंटेंट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है एंड लिंक यू नो कि कहां मिलेगा। अगर हम ओवरव्यू देखें तो रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर स्टेटेड दैट चाइनीज ट्रूप्स tried to transgress across the line of actual control to unilaterally change the status quo in Tawang sector, but they were thwarted by a firm response by the Indian army, right? The attack on the last bastion, the judiciary, it is available on page number 6 और ये related paper to polity and governance से। In this article we have to know why there is a conflict between Supreme Court and government on appointment of judges, government's concern against collegium system, repercussions and what lies ahead। तो दोस्तों, इसको भी हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है, लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स आप यहां से भी देख सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज अ कंजर्वेशन बिल दैट एंडेंजर्स फॉरेस्ट राइट्स। इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 6 और ये रिलेटेड पेपर 3 एनवायरमेंट सेक्शन से। In this article, we have to know what are the key features and objectives of the Wildlife Protection Amendment Bill, criticism and way ahead। दोस्तों, इसको भी हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है एंड लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अगर हम ओवरव्यू देखें तो द बिल एम्स टू इंक्रीज द प्रोटेक्शन फॉर स्पीशीज दैट आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ। बाकी अदर पॉइंट्स के लिए यू कैन गो थ्रू दिस आर्टिकल, ठीक। Our next important headline is The Rise of Rural Manufacturing. It is available on page number 7 और ये related है paper 3 economy section से। In this article we have to know what is a trend in the manufacturing sector in India, reasons for the shift of manufacturing away from urban locations, impacts, challenges and suggestions। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। अगर हम ओवरव्यू देखें तो ट्रेंड हैज बीन नोटिस्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया व्हिच इज अ शिफ्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम बिगर सिटीज टू स्मॉलर टाउन्स एंड रूरल एरियाज। Rural areas have generally been more attractive to manufacturing firms because wages, property and land costs are all lower than in most metropolitan areas, right? Our next important headline is Analyzing US-China Bilateral Ties. It is available on page number 8. Here related paper to international relations. In this article, we have to know about US-China relations, issues and what was discussed between the two leaders on G20 sidelines and what does the future hold। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स लाइन बाय लाइन यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। अगर हम ओवरव्यू देखें तो यूएस चाइना रिलेशंस have witnessed an unprecedented downturn in 2022, right? Our next important headline is Ministry evades direct reply on demand to include Ladakh under 6th schedule. It is available on page number 10 और ये related paper to polity and governance से। In this article we have to know about 6th schedule of the constitution। तो दोस्तों, 6th schedule under article 244 provides for the formation of autonomous administrative divisions that have some legislative, judicial and administrative autonomy within the state, and it applies to the northeastern states of Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura। Our next important headline is Aurobindo inspired many generations, left his mark wherever he went, Modi। It is available on page number 11 और ये related paper 1 significant personalities से। In this article we have to know about Sri Aurobindo and his contributions। तो दोस्तों, इनको हमारी वेबसाइट पे कल ही कवर किया गया है एंड लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, राइट। आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज असम अकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लिस्ट सिटीजनशिप केस फॉर जनवरी 10। इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 11 और ये रिलेटेड पेपर टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो दोस्तों, सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 allows citizenship to illegal immigrants mostly from neighboring Bangladesh who entered Assam before March 1971, right?
Our next important headline is only 1/4 of sanctioned solar projects have taken off, says Minister. It is available on page number 12 or year related paper 3 environment section से. In this article, we have to know about scheme for development of solar parks and ultra mega solar power projects and its objectives and features. दोस्तों इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. अगर हम ओवरव्यू देखें, अंडर द स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, a total 57 solar parks were sanctioned until November end, right? Our next and last important headline is India may be first to hold satellite spectrum auction. It is available on page number 14 or year related paper 3 science and technology से. In this article, we have to know what is the relevance of satellite communications and recent developments linked to it. तो दोस्तों, India will be the first country to auction spectrum for satellite communications, and satellite communication refers to any communication link that involves the use of an artificial satellite in its propagation path, right? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही. Thanks for listening. For regular updates, you can follow us on various social media platforms.